पिछले साल वो सिर्फ $1.5 बिलियन, nearly $1.4 बिलियन तक ही सीमित रहा. So why has that funding halved to begin with? विक्रम जी बताइए, what is your assessment? Is it primarily a macro कारणों की वजह से कि अमेरिका में मंदी का डर, और उसके बाद we've seen what's happening with Israel and Palestine in the Gaza Strip, वो सारी चीजें multiply होकर overall investment environment पर असर डाल रही हैं? Harsha ji, that should not matter because technically it shouldn't, but the numbers say it. The numbers are saying it also. जैसे आप जब खाना चालू करते हैं शुरू में आप अच्छे से खाते हैं, एंड में थोड़ा कम खाते हैं. So we are digesting, we are at the end of a technology cycle, first of all. दूसरी चीज़ ये हुई है कि जो मार्केट की जो मल्टीपल्स है, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ग्रॉस मार्जिन मल्टीपल्स, वो काफ़ी श्रिंक हो गई. जो 2 साल पहले 40 गुना ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीपल था, वो शायद अभी 8 हो गया. तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ओवर वैल्यूड हैं लेट स्टेज में. अब वो आगे जा रही है पैसे उठाने के लिए, तो उनकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा है, और जो इन्वेस्टर वो कह रहे हैं वैल्यूएशन घटाओ. तो ये उनके बीच में ये थोड़ी सी आगे पीछे चीज़ें हो रही हैं. सीड लेवल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, थोड़ी वैल्यूएशन घटी है, बट आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल एनवायरनमेंट टू स्टार्ट अ कंपनी एंड एन इक्वली गुड एनवायरनमेंट टू सीड द नेक्स्ट स्टेज ऑफ विनर्स. तो दिक्कत जो भी आई है वो ऑफ कोर्स लेट स्टेज कंपनियां और जो कंपनियां आगे प्लान कर रही थी कि अब हम आईपीओ के लिए जाएंगे या फिर एक और बड़ा राउंड लेंगे, वहां पर है. विक्रम गुप्ता, आपकी असेसमेंट क्या है? पैसों की कमी है या फिर लोग बस थोड़े कॉशियस हैं? In fact, there is a lot of dry powder sitting right now in the system. So people have stayed away from investing for various reasons. 2022, we saw the interest rates in the US went up substantially high in a very short period of time. Therefore, liquidity crunch happened, and that led to what happened in SVB. And Indian startup ecosystem has 85% dollar capital and 15% rupee capital. So obviously, anything that happens in the US impacts the Indian startup ecosystem. So that put a lot of brakes 2022 onwards in terms of the funds wanting to deploy, because there was this kind of a thing about, then in my view, markets are now coming back in terms of VCs wanting to deploy capital. We ourselves have raised about 2,000 crores in our Fund 3, all domestic capital. We've deployed 450 crores in the last 12 months. And we will deploy probably another 1,500 crores in the next 18 to 24 months. We are quite excited and bullish about what's happening in the market. I think there has been a substantial increase in the maturity levels of the founders, and also the valuations have come to realistic levels. I will say realistic levels. So I think that's where there's good opportunity. मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहाँ पर यही कहा गया था कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस था. तो उसके बाद क्या ये एक बहुत बड़ा करेक्शन फेज है या फिर एक रियलिटी चेक है? आप इस एनवायरनमेंट को कैसे देखते हैं? So I think it's more a reality check, because when markets corrected, expectations and the late stage fintechs, they saw a correction that happened in terms of valuation, and they were pretty okay with rounds which were either flat rounds, and some went ahead and raised money even down rounds. But that correction was not visible even in terms of expectation when it came to early stage founders. So early stage founders were still of the view that we should get a similar valuations that we were getting back then in 2022. There is no correction that essentially happened in the early stage founders. But over the last 3-4 months, conversations and the expectations have come down. At least now there is an openness that we see in terms of asking a more reasonable valuation or talking a more reasonable valuations. So the last 4 months have been actually pretty good, because there is a reality check that these guys have also had, that we'll probably not get at early stages a similar valuation that we were getting in 2022, which were just up because, the larger guys were raising so much amount of money, and if your product was doing well, you thought, okay, my product should have this much value at the beginning. But yeah, now there is an expectation which has mellowed down. However, there's still a gap. It's not that, there's whatever is corrected in the late stages, it has trickled down to early stages. There's still a gap that we see, but more reasonable now. और ये जो करेक्शन देखने को मिला है शशांक, या फिर रियलिटी चेक, हाउ
how has it impacted the health of the ecosystem? Are we looking at more vibrant companies coming out after this phase? You know, we run and operate an early stage fund, which is investing as the first institutional check. Now, with our 140 plus portfolio companies in 4 years, our mission is still the same, to our ability to deploy in 100 companies a year. हम लोग वही target chase कर रहे हैं. So we fundamentally believe that this is here to stay. I would like to interject over here with pointing out to the audience that India is sitting on a 1.4 billion population, the most deeply penetrated, digitally connected ecosystem, and the valuations are by far the lowest across the world, with a lot of capital coming into India, right? So आप कोई भी mathematics लगा लो उसके अंदर, India is still the next best lucrative market for the next 10 years, right? With that assumption, we are going ahead and aggressively deploying, and we've seen 10 to 15% of our portfolio go to Series A. हमारे चेक के बाद प्री सीरीज आता है, नॉमेनक्लेचर ऐसा ही, मतलब थर्ड स्टेज पे वो जा पा रहे हैं, फोर्थ स्टेज हमारे हिसाब से सीरीज भी रहेगी जहाँ पे हम एग्जिट करेंगे, एंड वी आर सीइंग 10 to 15% of our portfolio companies now, which is, I believe, a decent number, and I fundamentally believe that the next 10 years is here to stay. So we are very, very bullish. डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं मशहूर कार कंपनी लंबोर्गिनी के बारे में। दरअसल इस कार कंपनी के बारे में बहुत सारे फन फैक्ट हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिनको सुन के काफी अच्छा लगेगा। दरअसल इस कार कंपनी को पहली चीज तो ओन करता है फॉक्सवैगन। जी हाँ, मल्टीपल टाइम इसकी डील होने के बाद अब फिलहाल इसे फॉक्सवैगन ग्रुप ओन करता है। इस कंपनी का नाम इनके ओनर के नाम पे, जिनका नाम था फेरोशियो लंबोर्गिनी, उनके नाम पे रखा गया था 1963 में। और दरअसल जो फेरोशियो लंबोर्गिनी साहब थे वो इटालियन रॉयल एयर फोर्स में कार्यरत थे 1940 में, और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत बतौर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर के की थी। और शुरू में लंबोर्गिनी ट्रैक्टर्स बनाते थे, और जो पहला ट्रैक्टर उन्होंने बनाया था वो मिलिट्री व्हीकल के कुछ यूज्ड पार्ट से ही उन्होंने बनाया था, जिसके बाद अपनी पहली कंपनी उन्होंने इनिशियली फॉर्म की थी। लेकिन फिर धीरे धीरे वो कार के कारोबार में होता है, और एक बड़े चैलेंज के बाद वो इस कारोबार में उतरे। दरअसल खुद फेरोशियो लंबोर्गिनी साहब जो थे वो फरारी चलाते थे, और एक फरारी में उनके क्लच को लेकर कुछ इशू आया था, जो कंप्लेंट उन्होंने फरारी के मालिक से की थी। और जब उन्होंने इसको डिनाई किया और उन्होंने उनको चैलेंज किया कि इस तरह की गाड़ी बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उस चैलेंज को उन्होंने बहुत सीरियसली एक्सेप्ट किया, और उसके बाद इन्होंने खुद एक सुपर फास्ट कार बनाई जो कि लंबोर्गिनी के नाम पर बाद में आपको काफ़ी मशहूर होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही बता दूं कि जो खुद वो बहुत बड़े फैन थे, जो फेरोशियो लंबोर्गिनी साहब थे खुद बहुत बड़े फैन थे स्पोर्ट्स कार के, इसीलिए वो खुद फरारी ओन करते थे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो पहली लंबोर्गिनी शोकेस की गई थी किसी ऑटो एक्सपो में, उसमें इंजन नहीं था, उसके अंदर खाली वो बॉक्स था, उसको दिखाया गया था गाड़ी को, लेकिन उसके अंदर इंजन नहीं था, क्योंकि उस समय पर इंजन बनकर आ नहीं पाया था, तो उसके अंदर इंजन लगा नहीं पाया था, जिसकी वजह से वो बिना इंजन की शोकेस की गई थी। और साथ ही साथ क्योंकि फेरोशियो लंबोर्गिनी साहब काफ़ी ज़्यादा उनको बुल फाइटिंग पसंद थी और बड़े उनको फेवरेट स्पोर्ट भी था ये, इसीलिए उन्होंने गाड़ी का जो लोगो है उसके अंदर बुल साइन को शो भी किया, और इनफैक्ट उनकी ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो उस फाइट के बुल्स के नाम पे ही रखी गई थी। इसीलिए उनकी जो पहली बुल सीरीज़ की कार आई थी उसका नाम था म्यूरा। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 1987 में ये कंपनी ऑन द वर्ज ऑफ शटडाउन थी, लेकिन वहाँ से फिर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हुए और फॉक्सवैगन ने इसको ओन करना शुरू किया। दो फन फैक्ट और भी हैं। एक, दुबई की पुलिस लंबोर्गिनी Vikram, because you've raised funds recently and you've also started deploying them. In the last 6 months, कितना आपने फिनटेक कंपनियों में पैसा डाला है? तो हमारे पोर्टफोलियो में 4 कंपनीज हैं अभी जो फिनटेक कंपनीज हैं। रिसेंटली हमने एक कंपनी है ग्रैड राइट जिसमें हमने पैसा डाला है। दे प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड, सो फॉर हायर एजुकेशन। Then we have companies like Lendbox, FinPay, which is our common company, and also FT Cash. Okay. So ये हमारी कंपनीज में हमने पैसा डाला है।
हमने सपोर्ट भी किया इन कंपनीज को. सीरीज ए के बाद वी हैव फर्दर सपोर्टेड दिस कंपनीज इन द लास्ट. इनमें से कोई ऐसा कम वैल्यूएशन पर हुआ है या फिर उनके वैल्यूएशंस जस्ट के तस हैं? वैल्यूएशंस जो हैं थोड़ी रियलिस्टिक हुई हैं वैल्यूएशन डेफिनेटली. एंड जहाँ पे भी हम फॉलो ऑन करते हैं, जब एक्सटर्नल इन्वेस्टर आता है तो दे सेट द वैल्यूएशन. एंड बट there has been cases where we have done rounds, follow-ons as a discount to the next round. So in your own portfolio, you're supporting companies. You don't want to necessarily put a valuation number because you would rather benchmark it against the next round. And especially in this market, it's very hard. Your baby is always good. You would always want to value it the maximum, but because it's a little bit of tricky situation, so you always do it as a discount to the next round. In the last, this 450 crores that we deployed, I would say that we've seen at least 30% corrections from 2021. So 30 to 40% corrections. Perhaps it is what the market also demands. Vikram Chachra, आपने भी, मैं इनफैक्ट आपका पोर्टफोलियो देख रही थी. You're absolutely bullish on fintech, aren't you? पर किस तरह के नए आइडियाज अब यहाँ से ज्यादा इन्वेस्टर्स को आकर्षित करेंगी, चाहे वो अर्ली स्टेज में हो, सीड स्टेज में हो या फिर लेटर स्टेज में हो? किस तरह की पाइपलाइन बिल्ड होगी जो अगला यूनिकॉर्न क्रिएट करेगी बेसिकली? I think that's a great question. And if you really think about it, the way fintech is growing is very much aligned with what the government wants, right? I remember 15 years ago, I had a meeting with other investors. I met the governor of RBI. And he said, my biggest problem is how do we increase banking penetration? Only 1 out of 2 Indians had a bank account. So no matter what they were trying, the banking penetration was not increasing. So the government rolled out Aadhaar, right? They opened a bank account. And the government said, if you open a bank account, we will give you Narega in that, right? Next thing, we gave them digital payments. So we started with digital identity, digital payments. And as we were discussing before, we want to now make sure that every single Indian is eligible for credit, right? So if you think about it, 800 million या 80 करोड़ इंडियन के पास बैंक अकाउंट है, 2.5 बिलियन अकाउंट, 250 करोड़, जिसमें से 180 मिलियन इंडियंस या 18 करोड़ इंडियंस को कभी क्रेडिट मिला है फॉर्मली. तो ये 600 मिलियन को क्यों नहीं मिल रहा है? ये एक चिकन और एक प्रॉब्लम है. अगर आपके पास क्रेडिट फाइल नहीं है तो आपको कोई लोन ही नहीं देगा. अभी I'll ask a question to the audience. You all have your banking history, transaction history. Who do you think owns that data? She says, it's me. Under the new Data Protection Act, we own it. We own it. Yeah. So what has happened now with the technology that is going out now, the new framework, account aggregator framework, with a single click, you can transfer your entire banking history to a potential lender or an insurer. What that means fundamentally, कि 800 million लोग अपनी बैंकिंग हिस्ट्री किसी को दे करके अपने को लोन ले सकते हैं. हमारी इनकम दिखेगी. तो ये जो क्रेडिट ब्यूरो वाली प्रॉब्लम ये खत्म होने वाली है. अगले 10 साल में आप देखोगे इंडिया में जो क्रेडिट ऑन यूपीआई आने वाला है, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है. पिछले साल हमने 35 करोड़ स्मॉल लोन दिए हैं, जिसमें से 2/3 वर गिवन बाय फिनटेक्स. हमारे हिसाब से हर साल, हर महीने 5 साल के अंदर नहीं भी तो 100 करोड़ लोन जाएंगे. So we are now approaching a new paradigm in lending, right? Where everybody gets eligible, everybody gets credit, right? Small businesses get credit, and therefore economy does well. I'm very excited, and that's where we are investing. तो सालों से जो लोग कहते हैं ना, you should build for the next billion. This is the next billion that fintechs will be addressing. महक, अब ऐसी स्थिति में फिर IIFL का जो फंड है, वो किस तरह की कंपनियों को largely back कर रहा है? क्योंकि even in fintech, there's a variety of opportunities. But what is IIFL bullish on? So, we have been bullish on this India story, and like he rightly said that, credit becoming, credit going to everyone that doesn't have access to credit, and that changing. So we have till now also invested and supported companies that are enabling this ecosystem. We very early on supported an account aggregator. We invested in FinView. We invested in a company called Finbox, again, which was basically building an API layer to enable finance on various platforms. We invested in a company called Legality, which was again basically digitizing the entire document signing process.
So while we have been looking at players that can enable the ecosystem, that are ecosystem enablers, largely because we think lending is not per se very easy, right? So to identify fintechs that can lend and make a business model out of lending at scale, it's a little difficult, right? Because it's tricky. Lending is about identifying the right person, and more than that, also having the collection capabilities. So today you see most of the fintechs or tech companies saying, we're going to monetize basis lending, but none of them have been able to prove it at scale, right? Even the larger ones have not been able to prove it at scale. So from our standpoint, we look at more enablers, whether they are enabling a process efficiency in it, whether they are enabling the leads, whether they are enabling the ecosystem by giving their APIs. Those are players that we are more bullish on from our standpoint. Shashank, the fact that Mihika ne bola ki, lending is not really easy. And we've seen that in the history of banking as well. But एक और फिर यहाँ पर मुद्दा उठता है कि ये सारी जो कंपनियां आई हैं, क्या ये वही कस्टमर को चेस कर रही हैं, इसीलिए ये स्केल नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए वो लेंडिंग इतना आसान नहीं हुआ है? क्या वो सिचुएशन है या फिर इट्स समथिंग एल्स? No, I think so. There are two ways of looking at it. First, when we've backed a lot of lending technology companies, exactly what Vikram was addressing, that is the next growth avenue. But उसके अंदर क्या होता है? एक होती है lending company which are doing off NBFCs, और एक होता है genuine technology बना रहे हैं. So if you're the latter part, that's where the disruption, I believe. We have a very large consumer base, and there's enough space, enough opportunity, because we've not even touched the surface, right? 10 players आएंगे, let them fight it out, let them sell, and 2 will survive. Even then you have enough space, right? There is no reason for us not to pull up our sleeves or stop working because already somebody. I don't think so. That's the thing. Because if you really do the cross analysis, there are so many funds, investors, as Vikram also mentioned, domestic capital बहुत ज़्यादा है. This is all experimental money for the first time in India, right? There is no reason for founders not to experiment, not to build. So no, I think there is no confusion from consumer standpoint. बहुत type के customer persona उभर रहे हैं, and there is enough and more opportunity. Basically, market saturate नहीं हुआ है, जो बीच में डर लग रहा था, especially जब इस तरह का दौर आता है कि people are not getting the money that perhaps they desired, that the market is saturating. वैसी situation नहीं है. To that, when you talk to your companies, Vikram Chachra and Vikram Gupta, I'd like you gentlemen to add on this. What are you advising? Because I remember the founder of Razorpay saying the earlier you be very diligent with your paperwork and the model, it is better than becoming a mid-sized company and a large-scale company, and then the regulator telling you that you can't do 80% of the things that you were doing in the past. What is it that fintechs that are sitting here or planning to develop and scale should be wary of in this environment where the market is immense, but you have to be very careful on how you scale? I think the the fundamental issue is be very capital efficient. I think there was this wave of somehow growth at any cost, just grow at any cost. And I think that mindset has completely changed. We've seen a substantial change now. The founders are becoming very, very conscious of the burn, the profitability, and they're just not going after anything and everything. And I think they are being very, very focused in what they're doing. So this is very fundamental to any business and any team. Ki whatever you are doing, make sure at the end of the day there is a profitability attached to it. Your edge is in the product. इसका मतलब कि let the banks do the long-term lending. You can focus on the very short term. The loan sizes are reducing. The loan tenures are reducing. Right? So if you think about the fastest growing segment is small loans. जो 25,000 रुपए का लोन होता है 3 महीने का होता है, हम कह रहे हैं वो 250 रुपए का लोन हो जाएगा और वो आप 2.5 दिन में लौटा दोगे. मैं तो कह रहा हूँ आपको 2.5 घंटे का भी लोन मिलेगा. Because sometimes you don't have money for 6 hours. You are a cab driver. You wake up in the morning. आप गैस स्टेशन में गए, आपके पास पैसे ही नहीं है. आपको उसी टाइम में पैसे चाहिए और आप दोपहर तक उसको लौटा सकते हैं ऑटो डेबिट करके. तो ये सारी टेक्नोलॉजी अभी आ गई है. So we are going into an era of instant credit, instant repayment, instant underwriting. We are looking at instant India. And that is going to start with fintech. Okay. And can I get a quick, instant 30-second responses from both of you on that? Due diligence in what are you advising your companies, portfolio companies at this point in time? I'll be very candid. Our objective is to invest in those companies which have the ability to A, create stickiness, and B, raise money
from institutional investors. After investing, I think creating the discipline of, governance, having that mindset, and how your core product is going to grow in compliance to whatever is happening in the ecosystem, particularly in fintech, is very, very important. Hence, when we look at any fintech company, we are evaluating, spending enough time in figuring out, are they hopefully not treading into something which RBI is not clear on. So those are the things which we look at, and I think that will remain for the foreseeable future. Yeah, so on similar lines, we have been, while evaluating, we're very careful of what the regulatory landscape is. And we keep advising our investee companies that, you have to be very careful when it comes to RBI, the governance, the laws which are coming in. And we keep doing these checks with them where, we check whether all the compliances are being met or not. We also ensure that there is a capital efficient model that they are building, right? So to a lot of our investee companies and the new companies that we engage with or we're advising them on, we say, if RBI is not in favor of a particular model, don't try to find ways to do it, right? So what has happened over the last... Stick to the rule book. Stick to the rule books. On that note, thank you very much. बहुत शुक्रिया. It's been great speaking to all of you. Thank you very much. डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं कैडिला लिमिटेड और जाइडस लाइफ की। दरअसल इस कंपनी की कहानी दो हिस्सों में है, इसलिए इसके दो अलग अलग नाम को मैंने यहाँ पर लिया है। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत दो दोस्तों ने की थी, रमन भाई पटेल ने और इंद्रवदन मोदी जी ने। ये शुरुआत हुई थी 1951-1952 के दौर में और करीब करीब 25,000 रुपए की इनिशियल कैपिटल के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इंद्रवदन मोदी साहब को मेडिसिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े रिफॉर्म में एक बदलाव किया है भारतीय मेडिसिन जो सेक्टर है उसके अंदर भी। पहली एम्प्लॉय इस कंपनी की जो रही हैं वो इंद्रवदन मोदी साहब की वाइफ शीलाबेन मोदी रही हैं और धीरे धीरे इस कंपनी ने एक्सपैंड किया और इस एक्सपेंशन में पहले इंद्रवदन मोदी साहब का भी बड़ा योगदान है और रमन भाई पटेल साहब का भी बड़ा योगदान है। लेकिन अगर पहले चरण की बात की जाए तो इंद्रवदन मोदी साहब इस कंपनी के लिए शुरुआत दौर में करीब 40 किलोमीटर के आसपास बाइसिकल से चलते थे और धीरे धीरे सारे कामकाज की देखरेख भी करते थे, जिसमें वो कंपनी के प्रोड्यूसर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटेंट, डिलीवरी मैन, पैकेजिंग, इस तरह के सारे कामकाजों का ध्यान भी रखते थे और धीरे धीरे उन्होंने इस कंपनी को एक बड़े लेवल तक पहुंचाया। इनफैक्ट एक ऐसा भी तथ्य माना जाता है कि शुरुआती दौर में वो कंपनी में से करीब 250 रुपए के आसपास विड्रॉ करते थे अपने बेसिक खर्चे के लिए और बाकी पूरी की पूरी पूंजी कंपनी के अंदर निवेश करते थे। और साइमल्टेनियसली रमन भाई पटेल भी उसमें काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करते रहे हैं इस तरह के एक्सपेंशन को लेकर। फिर इस कंपनी का एक 1995 में एक फैसला लिया गया जिसमें पेरेंट कंपनी ने इन दोनों कंपनियों का बंटवारा किया और इस बंटवारे में कैडिला हेल्थ गई मिस्टर पटेल के पास और कैडिला फार्मा गई मिस्टर मोदी के पास। कैडिला फार्मा जो कि नॉन लिस्टेड रही, लेकिन अब यहाँ से इस कहानी का दूसरा चरण शुरू होता है जो कि लिस्टेड एंटिटी है। सेपरेशन के बाद इस कंपनी के अंदर पहले तो कुछ एंटिटी को लेकर फेरबदल किया गया और इसके नाम के आगे जाइडस नाम अटैच किया गया। जाइडस जो कि एक ग्रीक गॉड ज़्यूस से लिया गया है, तो बन गई जाइडस वेलनेस और जाइडस लाइफ। ये दो नाम आते हुए दिखाई पड़े, जहां पर कैडिला फार्मा जो रही वो अनलिस्टेड रही। तो अब जाइडस लाइफ और जाइडस की जो वेलनेस आर्म है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। स्प्लिट के बाद क्योंकि फंड को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही थी तो मिस्टर पटेल ने एक समय पर $2 मिलियन के आसपास रेज किया था और उस समय पर उन्होंने बहुत कुछ अपनी पूंजी का दांव पे लगा दिया था। जिस घर में वो रहते थे उसके अलावा उन्होंने मेजरली सभी कुछ दांव पे लगा दिया था इस कंपनी एक्सपेंशन को लेकर भी। इसके अलावा एक बड़ा ब्रेक तब आया जब 1997 में ICICI बैंक ने एग्री किया उनको लोन देने को लेकर। उस समय पर केवी कामत साहब ने बात कही थी कि जो सिल्वर अपने घर का सिल्वर तक गिर Somehow our youth have the habit of taking not so desirable habits from the West and then not helping the country.
India's work productivity is one of the lowest in the world. Unless we improve